नमस्कार जी। अगर आपको ये वीडियो मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि आप मेरे से कहीं ना कहीं फ्रेंच लैंग्वेज से रिलेटेड कनेक्टेड है। या तो कभी मैंने आपको या फिर किसी स्टूडेंट को या फिर आपने मेरे से कभी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कभी इंक्वायरी करी होगी। सो मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में नोटिस किया है कि द स्टूडेंट्स आर लैकिंग बिहाइंड इन थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज़ लिसनिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स एंड स्पोकन फ्रेंच, स्पोकन स्किल्स, जिसको हम प्रोनाउंसिएशन भी कहते हैं। तो उसके थ्री मेरे मेजर रीजंस जो मैंने आइडेंटिफाई करे हैं। फर्स्ट, द टीचर्स आर टीचिंग विद द ओल्ड मेथड। आई मीन स्कूल के पास दे आइदर दे आर डोंट हैव द different tools to teach the subjects, or there might be other reasons. सेकेंड रीज़न जो मैंने आइडेंटिफाई किया है वो है कि नो वन इज़ फोकसिंग ऑन दीज थ्री एस्पेक्ट्स। स्कूल के अंदर भी फोकस नहीं कर रहे हैं, और पेरेंट्स दे डोंट हैव दैट मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस लैंग्वेज कि वो स्टूडेंट को डायरेक्ट कर सके, अपने बच्चों को डायरेक्शंस दे सके। थर्ड इज द स्टूडेंट डज नॉट हैव द इंटरेस्ट ऑन द लैंग्वेज। वाई वी डू नॉट हैव द इंटरेस्ट ऑन द लैंग्वेज इज दैट कि फिफ्थ में वो फ्रेंच, ही टेक द फ्रेंच बिकॉज ही दिस इज समथिंग न्यू, इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज, ही टेक इट। बट वो टीचिंग styles is are not good. Because of it, he's not able to develop the interest, he's not able to develop the vocabulary, concepts clear नहीं होते हैं, तो वो फिफ्थ सिक्स्थ में आके सेवन्थ में आके उसको एज अ बर्डन लगता है। एंड देन फाइनली एट्थ में आके ही थिंक ऑफ लीविंग इट बिकॉज ही इज नॉट एबल टू कंटिन्यू दैट, राइट। और उसका एक और रीज़न मैंने आइडेंटिफाई किया है कि एज पर पेरेंट्स दे डू नॉट फाइंड द गुड टीचर्स इन द मार्केट जो बच्चे को गाइड कर सके। तो हम इन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इन पेन पॉइंट्स को कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट है कि हमें बच्चे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है, हमें उसको डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग स्टाइल से उसको इनोवेटिव मेथड से उसको पढ़ाना है, जिसका इंटरेस्ट डेवलप बना रहे। और वो इंटरेस्टिंग मेथड कौन कौन से हैं, उसको कॉमिक्स बुक्स के थ्रू पढ़ा के, उसको शॉर्ट स्टोरीज के थ्रू पढ़ा के, उसको लिसनिंग डायलॉग के थ्रू पढ़ा के, हम ये सब इनोवेटिव मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं बच्चे की स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो हम टॉपिक ले रहे हैं, जैसे हमने कोई लिसनिंग स्किल्स या कोई कॉम्प्रिहेंशन मैंने उठाया, दैट शुड बी ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। नॉट कि मैं एक सेवेंथ क्लास के बच्चे को एक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई टेक्स्ट लेके उसको फ्रेंच पढ़ा रहा हूँ। आई थिंक दिस इज शुड नॉट बी डन। सो इन द प्रिव्यू ऑफ सेइंग कि ये जो स्किल्स है, लिसनिंग, रीडिंग एंड स्पोकन, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट जैसे इंग्लिश में एक आइल्स का एग्ज़ाम होता है, फ्रेंच में भी एक डेल्फ का एग्ज़ाम होता है। वो जो डेल्फ एग्ज़ाम इज़ अ इंटरनेशनल लेवल ऑफ एग्ज़ाम। जैसे हमने टेंथ क्लास तक फ्रेंच पढ़ी या मैंने कॉलेज तक फ्रेंच पढ़ी, और आई इफ़ आई गो इन आउटसाइड समवेयर एंड आई शो दैट कि आई हैव डन दिस, आई हैव डन BA इन फ्रेंच, और आई हैव स्टडीड टेंथ क्लास इन फ्रेंच, सो दे डोंट अंडरस्टैंड द लेवल। सो व्हाट दे से इज़ दैट कि हमारे एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम को आप क्लियर कर लो, जिस भी लेवल को आप क्लियर करोगे वी विल अंडरस्टैंड कि आपका क्या लेवल है। सो वो जो एग्ज़ाम्स के लेवल्स हैं वो A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, एंड सो ऑन। सो उन एग्ज़ाम्स के अंदर भी व्हेन दे टेक द इवैल्यूएशन, व्हेन दे टेक द एग्ज़ाम्स, they are judging into your four things. One is listening, they play a dialogue two times, and then they give you a questions based on the dialogues and you have to do it. They give you a comprehension, two comprehension. On the basis of that comprehension you have to answer. Third is spoken French. उसके अंदर you have a face to face interaction with the teacher. They ask you some question, or they put you in some situation or dialogue where you have to speak French, and then you are evaluated based on that. So it is so important, these skills, and no one is focusing, right? So we must understand that language learning is a process. It is not happen in a day or in a month or in a year. Slowly and gradually the student increase his vocabulary, increase his concept. The more and more he learn, the more and more he listen, the more and more he speaks, he develop his capability of language.
And you know, it depends on student to student also, that how speedily he is increasing the this capability, and how slowly he is increasing this capability. I have seen that the intelligent to intelligent student is learning a language in a slow process, and the average student is learning a language at a fast pace, right? So it's language learning is not something you can relate it to maths and science, right? It's a different aspects. Now, what is the benefits of the learning a language? We all know that it's a dynamic world, and learning language is always a added an advantage to you. Be it you're a doctor, you're a businessman, you're an engineer, whatever. You know this language, any language, I would say, you are kept apart from the general audience. It gives you an, new way of, going in your career, or maybe describing culture aspects, or maybe when you have to study where you have a foreign language thing, so you can go and explore the things, right? It's open and door for new things. Second thing, this age is very good age, like at the age of from 10 to 12 to 20 25. This age is, I mean, not 20 25, I would say from 10 to 18 at the school level. The age factor is very important because at this age you are learning something new. Your capability of grabbing the things is more, and your learning speed is very high, right? You have the time, you have the subject in the schools where slowly and gradually you are increasing the level. You are learning the basic vocabularies, and you are basically dedicating some time to this language, which generally do not happen when after school or after college you start learning this language. You do not have that environment of having it, right? Next is जो brain के some parts gets activated if you learn any language, and it's a proven thing. It's a scientific things. When you learn a language, your different part of the brain gets activated, and it increase your mental ability skills, right? So these are so in this preview. So to address this situation, so I have taken a step and started this a small course of 8 classes, where the student will definitely develop an interest, because it's a it's a teaching through the audios and the videos. So I have set off like kind of 10 to 12 dialogues where the students will listen 3 4 times. I will tell the meaning of each and every word, and whatever he will listen, he will see on the paper, and he can build his vocabulary also. So and these dialogues are definitely in a multiple situations, right? For example, some dialogue is in railway station, sometimes at the airport, sometimes at the supermarket, and some video is of like at the hotel, where I mean, these vocabularies are very important in day-to-day life. And this will definitely develop his interest. The basic general vocabulary, not you know as per the school syllabus, but something different, something additional he will learn. Moreover, I also have a kind of a book of short story book. It's a one story of 50 pages. In this, there are 5 chapters. In that 5 chapters, this story is between like a boy and his dog. He lost his dog, and then he goes to the police. So all these stories are, I mean, this story is there, and then you have a simple vocabulary in French. Everything is French. So I'll teach one by one every word, how the grammatical things is made, how to pronounce this way. So I will read it, and student will listen it. And in some chapter, I will ask student to read it, and I will listen it, and I will improve it in some manner. So this will develop his comprehension skills, right? Develop his and reading skills. This will not only develop his vocabulary, but also the grammatical concept at some point of time. So it's an beautiful thing that I think I thought which is give it to you. It's a very nominal price, बहुत basic सा price है. It's a cost of just one small piece of one class, right? So I want that my students at least should take this course and learn this language into the new
different way, because we should develop this language slowly and gradually during the over the period of time. Thank you guys. Thank you so much. Bye.